Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Let's resume the current topic, periodic table, and now I'm going to explain you the trends in the periodic table. So when we talk about the trends in periodic table, the very first thing is the trends in atomic size. So atomic size, let's move back to the our periodic table. Okay, this is the periodic table. Atomic size. Nearly all physical and chemical behavior of the elements is ultimately based on the electron configurations of their atom. This is what you understood right now. So we can say that atomic size greatly influences other atomic properties also. So agar hum iski, if we talk about this thing, if we talk about some sizes, so आप ये देखेंगे कि sizes जो हैं, first you need to understand in a very clear manner कि lithium, we'll start with lithium. So lithium, the atomic number is 3. Okay, 2 electrons are accommodated in duplet and 1 in the second shell. Okay, beryllium, second row है. Okay, तो इसका मतलब ये है कि electrons will sit in this level 2. Beryllium's atomic number is 4. 2 electrons are accommodated in the first shell, which is known as duplet, and 2 electrons will be in the second shell. Then we come to boron. Okay, now this boron 5 is the atomic number. 2 electrons are accommodated in first shell, which is called duplet, and the second shell there will be 3 electrons. Now you can see that in the second shell, number of electrons are increasing in this way, right? Size of the atom is not increasing, but the number of electrons are increasing. Okay? Now if we come from top to bottom, you will see this is lithium and this is sodium. Now distribute the electrons 3 in lithium. So 3 is the atomic number. First 2 electrons in the first shell and 1 electron in the second shell. So if we come downwards, sodium, atomic number is 11. 2 electrons are accommodated in first shell, which is called duplet. 8 electrons are accommodated in second shell, which is octet. Okay? 8 and 2, 10. 1 electron is left. It will go to the third level, third shell, and 1 electron will sit in that shell. Now, look at the size of lithium. Size of lithium ka first shell and second shell. Size of sodium, first shell, second shell and third shell की addition से size increase हो गया. Is that clear? अच्छा, अब जब size increase होता है तो lithium में जब electrons हैं, they are in the second shell. ठीक है? 1 electron is in the second shell. So distance nucleus से lithium के electrons का कम है. Okay? यहाँ distance कम है. आप इसको गौर करें, ये distance है. यहाँ पर electrons का distance ये है. So जब distance, if the distance is small, then the hold of the electrons is strong. I mean, positive charges which are in the center will hold the electrons more tightly. Now, if you increase the distance, the hold will become weak. Okay? जो positive charge का जो impact है on the negative charge वो थोड़ा सा weak होगा और electron जो होगा वो loosely bound होगा. Explanation आपने please remember रखनी है in the upcoming discussion also. So अब हम atomic size को explain करते हैं.
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको पता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस जब होगा, सो आउटर इलेक्ट्रॉन्स स्पेंड मोर टाइम farther from the nucleus, right? And increases as well, और size increase हो जाएगा. So net effect क्या होगा? The net effect of these influences depends on the shielding of the increasing nuclear charge by inner. तो एक shielding impact आ जाएगा बीच में से, right? इलेक्ट्रॉन्स के और प्रोटॉन्स के दरमियान. अच्छा, अब ये जो आपका टॉपिक है एटॉमिक साइज का, जैसे ही as we move down a main group, as we move down the main group, if a movement is like this, each member has one more level of inner electrons. तो एक लेवल इंक्रीज होता जा रहा है. फर्स्ट में सिर्फ 1 है, सेकंड रो में 2 शेल्स आ जाएंगे, थर्ड रो में 3 शेल्स आ जाएंगे, 4 में 4 आ जाएंगे, एंड सो ऑन. और जैसे ही जैसे साइज बड़ा होता जा रहा है, होल्ड जो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का है विद द इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, वो वीक होता जाएगा. ठीक है, साइज बड़ा हो रहा है, वो वीक होता जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका जो शील्डिंग इम्पैक्ट है, राइट? सो एज वी मूव डाउन अ मेन ग्रुप, ईच मेंबर हैज वन मोर level of inner electrons that shield the outer electrons very effectively. ठीक है ना? तो atomic radius generally increase होता जा रहा है in a group from top to bottom. अगर इसी चीज को हम across the periodic table देखें, lithium, beryllium, boron to carbon, boron to carbon. So across the periodic table, साइज नहीं इंक्रीज हो रहा, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू सेम आउटर लेवल. यानी कि लिथियम का देख लें तो सेकंड है, बेरिलियम का भी सेकंड लेवल, बोरॉन का भी सेकंड लेवल, कार्बन भी सेकंड लेवल, सो ऑन. So across the periodic table, electrons are added to same outer level. So the shielding by inner electrons does not change, ना कम ना ज़्यादा. Okay. So what's the next? Because outer electrons shield each other poorly, so nuclear charge rises significantly, right? Hold protons positive और negative charge का strong है. So वो क्या करेंगे? They pull the electron closer towards the nucleus. ठीक है? तो atomic radius generally decreased in the period from left to right. So atomic radius ऊपर से नीचे आए तो increase होता है. Across the periodic table, when you move, it will decrease. Then we come to the next topic, which is known as, let me get it, the next slide, which is atomic size. Trends in ionization energy. Acha, up first of all, you need to understand what is meant by ionization energy. Ionization energy is the energy which is required for the complete removal of 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atoms or ions. हम कहते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जाते हैं, गेन किए, लूज किए जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए जाते हैं. सो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो एनर्जी जो हमें चाहिए टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, राइट? So pulling an electron away from the nucleus requires energy to overcome the attraction. अब attraction है nucleus के साथ, उस attraction to break the attraction, to hog the attraction, to overcome the attraction, we need some energy. So energy flows in the system. So the ionization energy is always positive. Sign होता है इसके साथ. The ionization energy decreases down the group. ये periodic table पे down the group when you come, तो ionization energy जो है वो decrease करती है down a group. It is easier to remove an outer electron from an element in period 6 than in period 2. क्यों? क्योंकि period 2 में 2 levels, 2 subshells हैं, distance थोड़ा है electron का from the nucleus. But in period 6 there are 6 shells, distance
जो है वो इंक्रीज हो गया है इलेक्ट्रॉन्स का, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो इतना इम्पैक्ट नहीं होगा उस पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन का। सो वहाँ से हमारे लिए इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी होगा। बट वैसे जैसे ही हम एज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ऑर्बिटल जो रहे तो सेम ही रहेगा, बट द सेम न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होगा ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाएगा, क्यों? जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स के नंबर इंक्रीज होंगे तो न्यूक्लियस के साथ उनकी इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी और वो सिकुड़ते चले जाएंगे ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। The attraction between nucleus and outer electrons increases, then it's very hard for us to remove the electron. So ionization energy increase होगी. Then we come to trends in metallic behavior. Trends in metallic behavior ये है कि metals आपको पता है कि तमाम from left to lower three quarters of periodic table, and they metals easily tend to lose electrons to non-metals. Example you can have of the sodium chloride. Sodium chloride is the metal, okay? It will lose one electron and become positive and cation. Chlorine is the very common non-metal which gains one electron and become chloride anion, negatively charged species. So non-metals जितने भी हैं upper right quarter of the periodic table and tend to gain electrons from metals. Example मैंने आपको इसकी, same is with the non-metals. So non-metals जो हैं वो भी upper right quarter में हैं of the periodic table. They gain the electrons which are lost by the these metals. So metallic behavior decrease करता है from left to right and increases from top to bottom. Last but not the least topic is the electronegativity. I told you that electronegativity is the power with which the electrons are pulled. For example, if we have hydrogen chloride, a polar covalent bond, hydrogen makes with chlorine. So chlorine is partially negative because it is highly electronegative as compared to hydrogen. So hydrogen, okay, now the pair, this pair of electrons, two electrons यहाँ पर हैं. This one line is representing two electrons. One electron is contributed by hydrogen and the other one is contributed by the chloride ion. So ये जो पूरा जो pair है ये ज़्यादातर it will remain in the vicinity of chlorine. Why? Because chlorine is very highly electronegative as compared to the hydrogen. सो क्लोरीन के जो हेलोजन्स हैं उनके टॉप में होता है फ्लोरीन. सो अगर हम पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल वी कम टुवर्ड्स द फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है. अगर हम बॉटम से ऊपर की तरफ आएंगे टुवर्ड्स फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है. इफ वी गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है. If we go from top to bottom of the periodic table, electronegativity decrease. So these are the different trends which you can, just looking at the periodic table, you can understand. I hope you understand this lecture very clearly. And this is the last lecture. Thank you so much.